Hello students, today I will be starting with another chapter in physiology, that is mineral nutrition. So let's start with it. Now in the mineral nutrition, first of all we will see what is nutrient. It is a chemical substance that functions as a raw material for the synthesis of the structural and functional substances of living organism. So nutrient, it is a chemical substance that function as a raw material for the synthesis of structural and functional substances of living organism. Right? Now nutrient के अंदर एक category है, that is mineral nutrient. अब ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट है, दे आर inorganic substances. They are the inorganic material which are obtained by the plant from the soil, and they act like the raw material for the growth and reproduction of the plant. So what are the mineral nutrients? They are inorganic substances, inorganic material which acts like the raw material of plant, and these inorganic substances, they are obtained by the plant from the soil. So we can write this. They are inorganic substances obtained by the plants from soil and function as raw material for the synthesis of the structural and functional substances in the plants. Now mineral nutrient का मतलब तो समझ लिए ना. What is the mineral nutrition? It is the study of absorption of mineral nutrient. कैसे plant and mineral nutrients को soil से absorb करता है, and how the plant utilizes this mineral nutrients for the growth and development. All they study this includes, all they study this represents mineral nutrition, right? तो यहाँ पर हमने इस टॉपिक को कवर करना अंडर द फॉलोइंग सब हेडिंग्स. फर्स्ट, essential elements. In the essential elements, one, I will be dealing with the criteria of essentiality, right? Second, types of essential elements. Then functions of essential elements, their deficiency symptoms, then toxicity of essential elements. Now the second topic which I will be dealing in this chapter, that is hydroponics. Hydroponics, this is a methodology which is utilized for studying the mineral nutrition in the plant. Then absorption and translocation of
elements, essential elements. Then the last one, which is very important topic for this chapter, where I will be dealing with the nitrogen metabolism. Now, first of all, I will be starting with the essential elements. Out of the total 105 elements discovered, प्लांट के अंदर मोर देन 60 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. More than 60 elements, they are found in the different plants. Like some of the plants, they can accumulate selenium. The example for this is Astragalus species. Even some of the plants, they can accumulate gold. This accumulation is by the Phacelia. Even some of the plants, they can accumulate radioactive elements like strontium. This is by the barley. अब 60 से ज्यादा एलिमेंट्स है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. आउट ऑफ द टोटल 105 एलिमेंट्स दे हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि ये जितने भी एलिमेंट्स प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, क्या ये सारे एलिमेंट्स प्लांट के लिए नेसेसरी है? Now it means how we will know that what is essential for plant and what is not. So to know this, which element is necessary for the plant, I will be dealing with the criteria of essentiality. The criteria of essentiality, it was given by the two scientists, that is Arthur and Stout. Now the first one I will be dealing here. The element must be essential. The element must be absolutely necessary for the growth and development of plant. It means in the absence of the element, plant is not able to complete its life cycle, or plants, they are not able to set their seeds. So the first one, element must be absolutely necessary for promoting plant growth and रिप्रोडक्शन. मतलब कि अगर प्लांट के अंदर इस एलिमेंट की एब्सेंस होगी, प्लांट इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल और सेट सीड्स. नेक्स्ट वन, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट मस्ट बी स्पेसिफिक. The requirement of element must be specific and it is not replaceable by any other element. Yes? So requirement of element must be specific. And it is not replaceable by other element. इट मीन्स अगर इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी प्लांट के अंदर होती है तो इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी कैन नॉट बी ओवरकम बाय सप्लाइंग एनी अदर एलिमेंट.
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं क्लोरोफिल. यू नो दैट क्लोरोफिल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, वन इज दी हेड, another one is tail. और हेड के अंदर बीच में कोर में जो एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज मैग्नीशियम. अगर प्लांट के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, सो दैट एलिमेंट कैन नॉट बी, द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट. मीन्स वी कैन से द रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट इट इज नॉन रिप्लेसेबल, इट शुड बी स्पेसिफिक, right? Next one, element must be directly involved in the metabolism of plant. Element must be directly involved in the metabolic activities of the plant. तो इन क्राइटेरियाज को देखने के बाद, इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर हमने 17 एसेंशियल एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कराया. So there are total 17 essential elements on the basis of these criteria. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है इनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स आई विल बी डीलिंग हियर. सो हियर आई विल बी डिस्कसिंग essential elements one on the basis of their concentration present in the plant. Yes, so the first basis, that is quantitative basis, that is the concentration of the element which is present in the plant. Now on the basis of this I will be dealing two categories. One is macronutrient and the another one that is micronutrient. तो नाम से ही पता चल रहा है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन लार्ज अमाउंट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट, दे आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन द स्मॉल अमाउंट. दैट्स व्हाई द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दे आर आल्सो नोन एज ट्रेस एलिमेंट्स. तो स्मॉल अमाउंट के अंदर प्लांट में रिक्वायर्ड है, वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज ट्रेस एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन, हियर आई विल बी डिस्कसिंग द टाइप्स ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म. तो यहां पर चार मेन कैटेगरीज मैंने डिस्कस करनी है. One, structural elements. Then I will be dealing with the energy transducers. Then catalytic elements. And the last one, the elements which are responsible for maintaining osmotic potential in the cell. Another one is the type of the essential elements on the basis of their availability. On the basis of the availability, I will be discussing two types of the elements, the elements which are obtained from soil. तो अभी जैसे मैंने बताया, जो elements soil से obtain होते हैं उनको हम कहते हैं mineral element. The elements which are obtained from water, from the atmosphere, from the air, these elements they are known as non-mineral.
And the last one, I will be discussing the types of the elements on the basis of mobility in the plant. So it's quite simple. जो elements plant के अंदर move कर सकते हैं, these elements they are known as mobile elements. और जिन elements के अंदर ये mobility absent है, they are known as non-mobile elements. Right? So first of all, I will be dealing with this category, that is the types of the essential elements on the basis of amount which is present in the plant. So let's see now the major differences between the macro and micronutrients, or macro or micro elements. Macronutrients, अभी जैसे बताया, they are present in the plant, they are required by the plant in large amounts, they are present in the plant in more than 10 millimole per kg of dry matter. Right? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर रिक्वायर्ड है ओनली ट्रेसेस में, तभी क्या कहते हैं हम, ट्रेस एलिमेंट्स. द अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट नाउ इट इज लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर ऑफ प्लांट. अब 17 essential elements and 17 essential elements में से the 9 essential elements they are macro and the 8 they are micronutrients. अब कौन कौन से macro और micronutrients है, फटाफट उनको एक बार हम यहाँ पर लिस्ट कर लेते हैं. So in the macronutrients you write hydrogen, carbon, oxygen. Yes, this is on the basis of the concentration. Means ये maximum amount में present है, और जैसे जैसे मैं नाम लिखती जाऊंगी तो concentration है वो plant के अंदर कम होती जाएगी. Then nitrogen, potassium, then calcium, magnesium, phosphorus and sulfur. Now coming to the micronutrients. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्लोरीन, आयरन, बोरॉन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, निकल एंड मॉलिब्डेनम. अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स का मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, इसमें से जो एलिमेंट सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ है, द एलिमेंट विच वॉज लास्टली फाउंड टू बी द एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज निकल. और इसमें से जो आयरन है, पहले आयरन को हम कंसिडर करते थे मैक्रो एलिमेंट, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ द माइक्रो एलिमेंट्स. तो यहां पर मैंने जितने भी नाम लिखे हैं एलिमेंट्स के, उनके जो सिंबल्स लिखे हैं, दैट इज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द प्लांट. Now let's see what are the functions of the macro and micronutrients in the plant. So now let's see more differences between the macro and micronutrients with respect to the function. Now macronutrients, they take part in the formation of plant structure. Takes part in the formation of the plant structure, like they are the components of the cell wall. So you have studied this. The cell wall is made up of the calcium pactate, magnesium pactate. Now such type of the role
for the microelements that is absent. Another one, the macro elements, they are involved in the formation of protoplasmic structure and molecules. जो प्रोटोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सारे स्ट्रक्चर के अंदर मैक्रो एलिमेंट्स प्रेजेंट है. सो वी कैन राइट दिस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लास्मिक स्ट्रक्चर्स and molecules. And microelements का ये जो role है, that is very less. They have very little role in the formation of these molecules. Next one, macro और micro nutrients दोनों के दोनों एंजाइम एक्टिवेटर का काम कर सकते हैं. बोथ दे कैन वर्क लाइक एंजाइम एक्टिवेटर्स, पर मैक्रो एलिमेंट्स का एंजाइम एक्टिवेशन के अंदर सेकेंडरी रोल है. दे हैव सेकेंडरी रोल, और जो मैक्रो एलिमेंट्स है दे हैव प्राइमरी रोल इन द एंजाइम एक्टिवेशन. Now the macronutrients, they help in maintaining the osmotic potential of cell. Yes, they help in maintaining the turgidity of cell, maintaining osmotic potential of cell, and such type of the role for the micronutrients that is totally absent. अब कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं विच आर द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स. तो आपने नाम सुना होगा साइटोक्रोम. साइटोक्रोम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट है दैट इज आयरन. Then another one is the plastocyanin. There the electron carrier which is present, that is copper. So the micronutrients, some of the micronutrients, they are involved in the electron transports. They are the part of the electron carrier, and such type of the role for the macronutrients that is absent. Now the last one. जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दे सेल्डम रिसीव टॉक्सिक लेवल एट द हाई कंसंट्रेशन. सो सेल्डम टॉक्सिसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स दैट इज अचीव्ड. अगर कंसंट्रेशन ज्यादा भी होगी तो भी इस एलिमेंट की टॉक्सिसिटी नहीं अचीव होगी. बट द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर प्लांट में रिक्वायर्ड है, बड़े स्मॉल अमाउंट के अंदर प्लांट पे रिक्वायरमेंट है. अगर इससे अमाउंट कम हुआ देन दे विल शो डेफिशिएंसी सिम्टम, और अगर इससे अमाउंट ज्यादा हुआ देन दे विल शो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स. यस, आई एम रिपीटिंग दिस हियर अगेन. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट के अंदर रिक्वायर्ड है, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट. अगर अमाउंट उससे कम हुआ, लेस, then the deficiency symptoms they are shown by the plant. Deficiency होगी इन एलिमेंट्स की, और अगर उससे अमाउंट जरा सा ज्यादा होगा this results in the toxicity of these elements in the plants, right? So these were the important differences between the macro and micronutrients. Now here I would like to ask you one question. You have learned about the ETS in the 10th class. Even I had discussed with you in the bacteria. ETS, that is electron transport system. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का रोल मेजरली कौन करेगा यहाँ पर? यस, सो इलेक्ट्रॉन कैरियर का रोल कौन करेगा? दैट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. So now after the macro and micronutrients, I will be discussing 4 categories of the essential elements on the basis of function. So now the types of essential elements on the basis of function.
So here there are 4 broad categories. Now the first one I will be dealing here, that is structural elements. Now the structural elements, they are components of the biomolecules. Biomolecules like lipids, then proteins, कार्बोहाइड्रेट. तो यहां पर इस कैटेगरी के अंदर जो एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज कार्बन, hydrogen, oxygen and nitrogen. Next one, that is energy transducer element. Now energy transducers, as the name suggests, they have the ability to convert one form of the energy into the other. Change one form of the energy to the other, or you can say they are the part of the energy compounds. They are the component of the energy relating compounds. Components of energy relating compounds. So like one example which I can cite here, that is magnesium. Magnesium, it is the part of the chlorophyll. It absorbs the light energy and converts it into the chemical energy. Change of one form of the energy to the other, that is transducer. Another one, that is phosphorus. Phosphorus, it is the part of the energy currency of cell, that is ATP. Now next category, catalytic elements. Now the catalytic elements, they work like enzyme activators or enzyme inhibitors. So few examples I am citing here. One is magnesium. मैग्नीशियम इज अ मैक्रो एलिमेंट. मैक्रो एलिमेंट्स भी जो है वो एंजाइम एक्टिवेटर्स हो सकते हैं, पर एंजाइम एक्टिवेशन के अंदर जो उनका रोल है दैट इज सेकेंडरी. सो द मैग्नीशियम, इट एक्टिवेट्स 2 enzymes which are involved in the carbon dioxide fixation. One is pepco and the another one that is rubisco. Pepco, that is the phosphoenol pyruvate carboxylase. Right, this is carboxylase enzyme, and the rubisco, you know very well about it, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग एंजाइम है जो कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्लांट में प्रेजेंट है. इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट वन, that is molybdenum. Molybdenum, it activates enzyme that is nitrogenase which is involved in the nitrogen fixation. तो ये जो 2 मैंने enzymes का नाम लिखा है, they are involved in the carbon dioxide fixation, and these enzymes, they are activated by the macro element. Now this enzyme, it is involved in the nitrogen fixation and it is activated by the micro element. Then zinc helps in the activation of alcohol dehydrogenase enzyme. Now the last category, here I will be talking about the elements which helps in maintaining osmotic potential of the cell. Yes, which can
alter, which can maintain osmotic potential of the cell. I had discussed this in the previous chapter that potassium, a macro element, is involved in maintaining the osmotic potential. I had discussed this, that the potassium is involved in the opening and closing of stomata. पोटेशियम एक मैक्रो एलिमेंट है, राइट? और अभी मैंने ये बताया कि जो मैक्रो एलिमेंट है दे हैव सेकेंडरी रोल इन द एंजाइम एक्टिवेशन, पर पोटेशियम एक ऐसा मैक्रो एलिमेंट है विच कैन एक्टिवेट even 40 types of enzymes. Yes, 40 types of the enzymes can be activated by the potassium. Now after this, now I will be discussing the types of the essential elements on the basis of their availability. On the basis of the availability, essential elements, they are broadly divided into the two categories. जो elements soil से obtained होंगे they are mineral elements. तो ज्यादातर जितने भी elements है essential elements they are mineral, and the elements which are obtained from air, water, they are non-mineral elements. तो non-mineral elements के अंदर examples आएंगे carbon obtained from the carbon dioxide, hydrogen obtained from the water, then oxygen obtained from the water as well as air. अब एक एलिमेंट ऐसा है विच इज बोथ मिनरल एज वेल एज नॉन मिनरल, जो यहां पर मैं मेंशन करने वाली हूं, दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन कैन बी obtained फ्रॉम द सॉइल और इट कैन ऑल्सो बी obtained फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. सो नाइट्रोजन, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ बोथ द मिनरल एज वेल एज नॉन मिनरल. सो यू कैन कॉल द नाइट्रोजन एज पार्शियली mineral element. Right? Next one. In the essential elements, I would like to tell you about one category, that is critical elements. Critical elements, generally they are present in the deficient condition in the agricultural soil. They are deficient in the agricultural soils. Now, why they are deficient in the soil? One, they are lost from the soil through the process of leaching, right? Secondly, through the withdrawal by the plants. तो deficient क्यों है? One, they can be lost through the process of the leaching, and second, these elements they are extracted by the plants, because these elements they are required by the plants in the large amounts. And you might have heard about these elements which are critical. चलिए बताइए कौन कौन सा elements है जो critical की category के अंदर आता है? That is nitrogen, phosphorus and potassium. प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, अगर डिसऑर्डर्स प्रेजेंट है रिलेटेड टू दीज एलिमेंट्स, दीज डेफिशिएंसी सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स दे आर नोन एज प्राइमरी डेफिशिएंसी सिम्टम्स. और जिस फर्टिलाइजर के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे अप्रोप्रिएट एडिक्वेट अमाउंट के अंदर, दीज फर्टिलाइजर्स दे आर नोन एज कंप्लीट फर्टिलाइजर्स. अब यहां पर एक कैटेगरी डिस्कस करनी बाकी है, दैट इज द टाइप्स ऑफ द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द मोबिलिटी, दैट इज द मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट्स. अब ये जो कैटेगरी है आई विल डिस्कस व्हेन आई विल बी डीलिंग विद द डेफिशिएंसी सिम्टम्स. पर इसके अलावा एक और कैटेगरी हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द बेनिफिशियल और फंक्शनल एलिमेंट्स.
जो टोटल 17 एलिमेंट्स हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स है, राइट? आउट ऑफ दी 105 17 एलिमेंट्स दे आर एसेंशियल, पर इन 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं these elements they are required by higher plants. And this category of elements, what they are known as beneficial or functional elements. Right? तो 17 एलिमेंट्स हैं वो एसेंशियल है एंड दीज एलिमेंट्स दे आर रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी प्लांट, पर इन 17 एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स है पर इनकी एसेंशियलिटी, इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ कौन से प्लांट्स तक रिस्ट्रिक्टेड है? हायर प्लांट्स तक. तो ये जो एलिमेंट्स है विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी प्लांट, they are required by only higher plants. You will call them as beneficial or functional elements. So in this category I will be discussing one, that is sodium. Now sodium is required for the activation of enzyme that is PEP synthetase. इस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए ये एलिमेंट रिक्वायर्ड है एंड दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व्ड इन द फोटोसिंथेटिक पाथवे that is C4 and CAM plants. So now here I would like to add one point that on the basis of the photosynthetic activity, three types of the plants they can be distinguished. That is C3, C4 and CAM plants. जो majority of plants है ना वो C3 plants है, पर C3 plants के अंदर इस element की requirement नहीं है. This element is required only for the C4 and CAM plants. Right? Now coming to the next one. That is silicon. Now the silicon is required for the strengthening of cell wall. Strengthening of cell wall, and this requirement is there. One for the grasses, right? Next one. Now the next one, that is cobalt. Now the cobalt is required for the synthesis of leg hemoglobin. तो इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम ये कि ये जो leg hemoglobin है, it is required for the nitrogen fixation. Yes, it is involved in the process of nitrogen fixation. So you know that one category of the plants which can perform the nitrogen fixation where the leg hemoglobin is required, that is leguminous plants. Now the last beneficial element, that is selenium. Now the selenium is also an enzyme activator. Enzyme activator है, and it is required by the plants which belongs to the Brassica species. Right. So now this is all about the types of the elements. Now here I will be discussing the form in which these elements they are absorbed, that is essential elements they are absorbed by the plant, and what are the major functions of these elements.